Hello friends, welcome to Conceptify. My name is Ravi Jain and here we make all your concepts crystal clear. In last lecture, I have given introduction of Western political thought, and today I will start with, as per syllabus of UPSC in political science, I will start with first thinker, that is Plato. So philosophy not only helps in understanding the truth, but also bringing positive changes in society. This is about philosophy, and we are about to start lecture on father of political philosophy, that is Plato. Okay. Before we begin, let us see some PYQs, previous year question from 1992 to 2022. Okay. So for any political thinker, there are two type of questions. Okay, first is his particular theory, and second is his position in Western political philosophy, or thought. These two type of questions can be asked from any philosophers. Plato has multiple theories, so question has been asked from his theories. Theory of idea, theory of philosopher king, theory of communism, theory of education, and theory of state. So these are the first type, that is from particular theory of any thinker. Okay, and now the second type is his position in Western political thought. Okay, so this is the question. I am not discussing question at the moment, or I am not reading the question, because once we finish the chapter, we will try to solve these questions. Okay, so let's leave them. तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेटो, जिसे फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी कहा जाता है, एंड पॉलिटिकल थॉट वेस्ट में प्लेटो के वर्क से स्टार्ट होती है. द पॉलिटिकल थॉट हैज बीन ओरिजिनेटेड from work of Plato. All right. So first, let us see the context of Plato. Okay. It means that what were social, economic, and political condition at that time. We are talking about 5th century BC. Okay, so in social economic condition there was system of slavery system. It was based on master slave relation. Master used to perform intellectual work and slave used to perform manual work. ठीक है, तो स्लेवरी सिस्टम था जिस पर होल सोशल इकोनॉमिक सिस्टम वाज फाउंडेड. ओके, प्लेटो नेवर स्पीक ऑफ स्लेवरी. ऑल राइट, बट एरिस्टोटल gave his theory of slavery. All right. In terms of political, in Greece there was democracy. Athens was example of vibrant, participatory democracy. Okay, so in socio-economic condition was that there was slavery system, and in political there was democracy. All right, and later one thinker will come named as Hannah Arendt. She will talk about this kind of democracy or this kind of citizenship in which people
participate directly in political process. So she was influenced by this kind of democracy which was existing in Athens. Okay? तो ये डेमोक्रेसी जो एग्जिस्ट कर रही थी, दैट वाज एग्जांपल ऑफ परफेक्ट पार्टिसिपेटरी एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी. Okay? Now, something happened in this democracy. This lead to anti-democratic attitude. Anti-democratic attitude of Plato and Aristotle. They hated democracy. All right. तो सबसे पहले हमको समझना पड़ता है द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर थिंकर, बिकॉज द एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस पर्टिकुलर थिंकर, और वी कैन से दैट मैन इज क्रिएचर ऑफ हिज सर्कमस्टांसेस. Circumstances shapes the mind of particular thinker. Okay, so slavery and democracy. Now let us see brief timeline of 5th century. Okay, so in 431 BC, we are talking about 5th century BC. Okay, 431 to 404, there was famous war. It is known as Peloponnesian War. Peloponnesian War. This war was between two city states. ग्रीस में क्या होता था? There are 158 city states. 158 city states थे. इनमें दो इंपॉर्टेंट सिटी स्टेट थे, एथेंस एंड स्पार्टा. They were arch rival. Okay, जैसे US and USSR in Cold War. It is like US and USSR in Cold War. There were arch enemies. They were having different ideological system. तो एथेंस और स्पार्टा में different ideological system था, different education system था. When we will see theory of education of Plato, we will compare the education system prevalent in Athens as well as in Sparta. तो दो सिटी स्टेट थे, एथेंस एंड स्पार्टा, एंड देयर वाज फाइट बिटवीन देम. इट वाज द रिजल्ट ऑफ इट वाज दैट स्पार्टा won the war and Athens lost. Okay, lost. And there was rule of democracy. Okay, this was era of democracy. Era of democracy in Athens. तो डेमोक्रेसी थी, then they lost the war. So Plato blamed this or castigated this democratic form for the loss of war. Okay, why Athens lost the war? Because it was democracy. The rulers were ignorant. Rulers were democracy and ruler were ignorant. Ignorant rulers. Already I have told you that Plato and Aristotle have anti-democratic attitude, but I am telling you why they were having anti-democratic attitude. Because in Athens, due to existence or prevalence of democracy, Athens lost the war, the Peloponnesian War. Okay, and Plato was born in 420 BC. To 347 he died. All right. The first context is the loss of Athens in Peloponnesian War due to ignorant ruler or democracy. The first context of Plato is this. Second, in 399 BC, there is famous trial known as Socratic trial. Socratic trial. The issue was that Socrates was there. He is known as a teacher of Plato. All right. So he used to give education to youth that do not enter politics for money, power, and anything. Come in politics for welfare of the people. Okay. But this annoyed the people who were in power.
भाई सरकार के खिलाफ आप कुछ बोलोगे, डेमोक्रेसी के खिलाफ अगर बोलोगे, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, देन व्हाट विल डू, दे विल एग्जीक्यूट यू। आज भी तो यही होता है डेमोक्रेसी में। इफ यू स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट, दे इम्पोज वेरियस लॉज लाइक सेडिशंस। ओके, तो सोक्रेट्स के ऊपर चार्जेस लगे टू करप्ट यूथ, एनएसए जो लगता है आज, टू करप्ट youth of the Athens. All right. So he, in the trial known as famous trial, Socratic trial, he was giving the death punishment. Okay. And he was put in jail. और जेल में उसके फ्रेंड्स उसके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि you should leave the jail, you should run away. But Socrates denied. He said that we should follow the rule of law. All right, we should follow the rule of law. And he was given hemlock, a poison, and he drank and he died. So this was famous Socratic trial. And the death of Socrates due to the democracy had again created anti-democratic attitude in Plato. In Plato and later Aristotle. Okay, first was loss of Athens in Peloponnesian War. Second was Socratic trial. All right. So let us revise again. It was era of democracy and Athens lost war with Sparta in Peloponnesian War. This created anti-democratic attitude in mind of Plato. Okay, apart from that, in 399 BC, Socrates was put on death by this same democratic regime. It again created anti-democratic attitude in mind of Plato. Okay. Now, apart from Socrates, there will be one man named Galileo. He will come later in modern time, and he also again speak truth, and he was charged with some contempt. His books were burned. So democracy or any form of government is against, most of the time the ruling party is against the freedom of speech of the citizens. Okay, so that's why Plato hated democracy. The third is criticism of sophists. Criticism of sophist. Okay. 5th century में क्या था? There were sophists in Greece. Who were sophists? They were relativists. Relativist means they say that the truth do not exist in absolute form. No absolute form of truth. No absolute form of truth. Suppose there are 4 persons A, B, C, D. So truth for A will be different, B will be different, C will be different, and D will be different. So they were subjectivist people. Okay. So 4 person थे A, B, C and D. So they were relativist and they were political educationists. But they were bringing or they were preaching youth to come in politics for money and power, not for welfare of people. That's why Professor Barker calls them half professor, half teacher, okay, half philosopher. So सोफिस्ट जो थे उस समय, ना तो वो टीचर थे ना फिलोसोफर थे, वो क्या करते थे कि यूथ को करप्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि कम फॉर पावर, कम फॉर मनी,
So that's what they were teaching. And a famous sophist is Thrasymachus. He will come when we will discuss about theory of justice. Okay, so this was criticism of sophist. Sophist was relativist, यानी ट्रूथ जो होता है that do not exist in absolute form, that exist in relative form. Okay, यानी suppose a person is saying that it is a beautiful chair, we will say it is not. So the truth cannot exist in absolute form. They are saying, okay, sophist. Sophist will be criticized by Socrates in his theory of knowledge. Theory of knowledge. Just a minute. Theory of knowledge. So let us see what is the context again. It is Peloponnesian War first, Socratic trial second, and third is criticism of sophism. Three things are there which have impacted mind of Plato. Okay, now come to Socrates. Theory of knowledge. Socrates there, he is considered as teacher of Plato. Okay, and Plato is considered teacher of Aristotle. Aristotle is considered teacher of Alexander. Okay, sophists they were not perfect philosopher, they were half philosopher, half teacher, but they have oratory skill to attract the youth. They were influencing or corrupting the youth. Not Socrates was not corrupting, he was giving the true knowledge of politics. Sophists were having half knowledge. Okay, they just having opinion about something, but they didn't have true knowledge of politics, that politics should be performed for welfare of people, but they were having half knowledge. So Socrates ki theory of knowledge, it says that there are two kind of knowledge. First is opinion. Okay, and second is true knowledge. True knowledge. So sophists were having opinion, and the true philosophers have knowledge or wisdom. Okay, the opinion is not on any sound principle. It is just opinion. It is just impression. Okay, it is just an impression. It means that it cannot be proved. It cannot be proved. But true knowledge is based on sound moral principles. Sound moral principles. It can be proved. Okay, suppose there is a triangle. The sum of all angles of triangle is 180 degree. This is true knowledge. Suppose 2 plus 2, it is 4. It is true knowledge. The sum of two even number is even number. Okay, sum of two odd number is even number. Okay, so this is sound moral principle. It is true knowledge. It is not just impression. It can be proved. Then it becomes knowledge. True knowledge. Alright. The second point is it is subjective in nature. It depends on, subjective means depend on person to person. Suppose there is a beautiful rose or beautiful flower. One say it is beautiful, one say it is not beautiful. It means that it depends on person to person. Alright, but the true knowledge is objective in nature. It means that it do not depend on person. It is universal in nature. Again, we can take an example of this triangle. Triangle का sum हमेशा 180 डिग्री रहेगा. Suppose it is India or in Pakistan or in America or England.
always the sum of triangle will be 180 degree. Okay, and 2 plus 2 will always be 4. So it is not subjective. True knowledge is objective. All right. It is relative. It is absolute. Fourth, it depends on time, space, and it is independent of time and space. Uniform and universal. Okay. The fifth point is it is temporary. It is permanent. Sixth, it has instrumental value. It has intrinsic value. All right. तो हमने स्टार्ट किया था कि सोफिस्ट वर देयर इन 5th century and they were half professor, half teacher, half philosopher. They were just having opinion about something, about politics. They didn't have true knowledge of politics. That politics is used for welfare of people. Do not come in politics for power and money. All right. So Socrates came with theory of knowledge. Okay. Theory of knowledge is of two types: opinion and true knowledge. Opinion depend on person to person, time, space. Okay, that's why it is subjective. That's why it is relative. That's why it depend on time and space. Okay, that's why it is temporary, because it will change. But the true knowledge is on sound principles, like sum of triangle, angle of sum of triangle are 180 degree always. Sum of two even number is 4. Even number. Okay, so sound moral principle, it do not depend on time, person, that is, it is objective, it is permanent, it is transcendental, it is beyond time and space. Okay, it is intrinsic. So what is application of this theory of knowledge for Plato? Because we will see that the philosophical influence of Socrates can be seen in Plato. So from true knowledge, the path of true knowledge is path of virtue. Path of virtue. And who has perfect knowledge? The philosopher have perfect knowledge. Philosopher have perfect knowledge. Okay. So Plato will use this theory of knowledge for theory of philosopher king. And his theory of idea. Okay, and theory of education. All right. तो अभी तक हमने 3 चीजें देखी है बस. ओके, कि what influence particular thinker, the social, economic, political context of 5th century BC, because Plato belonged to 5th century BC in Greek. तो social political condition उस टाइम का क्या था? There was slavery, but interestingly Plato didn't have any contribution in slavery. Okay, but Aristotle have his theory of slavery. This is the first context. The political context was there was democracy. Athens has democracy. It was participatory, vibrant democracy and direct democracy. Later used by scholar like Hannah Arendt or philosopher like Hannah Arendt. But both Plato and Aristotle, it is said that Greek thinkers are anti-democratic in attitude. They were aristocrats. They defended the value of aristocracy. All right. So when we will discuss about chapter of democracy, these things will come in later. So the 3 things which influence Plato is: first, Socratic trial due to democracy. Second, loss of Peloponnesian War, loss in Peloponnesian War of Athens. Why Athens lost? Because in Athens there was democracy, rulers were ignorant, they were behind money and power. All right, so Athens lost the war. And
Plato castigated democracy for loss, for this loss. And third is sophism. When Plato was writing, there was prominence or prevalence of one semi-philosophy or pseudo-philosophy. That was sophism. But sophism has attracting power. अच्छा स्पीच देते थे वो, ठीक है. So they used to attract the youth. But youth were corrupted because they were not telling the truth. They were telling the half truth or the fake news. They were telling the fake news. All right. So they didn't have true knowledge. Yet what is true knowledge? They were criticized by Socrates through his theory of knowledge. He says that knowledge is of two types. One is opinion. It is just opinion of some person. He do not have true knowledge. Opinion can be refuted, opinion cannot be proved. Opinion is temporary. It can be changed later. Depend on time and space. It is relative, it is subjective. Alright? But the true knowledge is based on sound principle, mathematical theorems. Pythagoras theorem है जैसे, तो hypotenuse square, perpendicular square plus base square. So it will remain always. So the true knowledge is not subjective. It is objective, permanent, do not depend on time and person, universal, uniform. So he says that the true knowledge is always permanent, absolute. So the who can have this notion of true knowledge or absolute truth? The philosopher will have true knowledge of philosophy. Truth. Okay. Plato will use this theory for his theory of idea and theory of philosopher king. Alright. Who should rule in society? The person who has knowledge. Okay. Second concept of Socrates, knowledge is virtue. Knowledge is virtue. Virtue. Okay. It means so in society there can be different virtues, but knowledge is important virtue in society. And there is a famous quote that unexamined life is not worth living. Worth living. Okay. What does it mean that? It means that the objective of life is always good life. Okay. How will you achieve good life? Through excellence. And how will you get excellence? Through knowledge. Because knowledge is virtue. And knowledge कैसे आती है? Through dialectics. I will tell you what is dialectics. It means questioning things around us. Socrates क्या कर रहा है? Socrates was examining the sophism. He was critically examining sophism. Okay? This is called dialectics. Dialectics means you have to ask the questions. Alright? We will see detailed meaning of dialectics when we will discuss theory of justice. So, unexamined life is not worth living. You need to ask questions about surroundings. That's why in democracy, freedom of speech and expression is there. It is fundamental right in Indian Constitution under 19(1)(a). You should ask question from government because unexamined life means the question has not been asked. The rational or critical inquiry has not been conducted. That is unexamined life. Socrates was saying that you should ask questions about the phenomena happening around. Okay. So the meaning of life is good life, or good life कहाँ से आती है? Excellence से. And once you attain knowledge, you will have excellence. And how to attain knowledge? Through dialectics. And dialectics meaning the art of asking questions. All right. So this is all about Socrates. Socrates. अब Socrates का मतलब ये है कि
There was a figure known as the teacher of Plato, हिस्टोरिकल सोक्रेटिस वाज देयर. लेकिन जब प्लेटो अपनी बुक लिखता है रिपब्लिक, ही यूज सोक्रेट्स एज हिज माउथ पीस, हिज कैरेक्टर हु वर आस्किंग क्वेश्चन. तो एक तो सोक्रेटिस है जो हिस्टोरिकल फिगर था, जो हिस्ट्री में रहा था, एक्चुअल पर्सन. एक रिपब्लिक का कैरेक्टर है, उसका नाम सोक्रेटिस रखा है. ओके, सो ही विल आस्क क्वेश्चन थ्रू माउथ ऑफ सोक्रेटिस. यानी प्लेटो ने मूवी लिखी, इसका नाम है रिपब्लिक, और उसमें एक कैरेक्टर है सोक्रेटिस. यानी प्लेटो इज स्पीकिंग इन दैट मूवी थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सोक्रेटिस. ओके, जब हम जस्टिस की थ्योरी पढ़ेंगे तो सोक्रेट्स विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट पर्संस. इट इज प्लेटो हु इज आस्किंग क्वेश्चन थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सोक्रेटिस. तो फिलोसॉफिकल नोशन जो रिपब्लिक में सोक्रेटिस मेंशन है वो अलग है, दैट इज एक फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय प्लेटो. ऑलराइट, और जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर है ये जो सोक्रेट्स, दिस इज डिफरेंट. ओके, वन इज एक्चुअल पर्सन एंड अनदर इज हाइपोथेटिकल पर्सन क्रिएटेड बाय प्लेटो, ए कैरेक्टर. ऑलराइट, सो सोक्रेट्स मीन्स theory of knowledge, the true knowledge. Who has true knowledge? Philosopher. Okay, and knowledge is virtue. अब ये चीज सोक्रेट्स की जो चीजें हैं, दे विल इन्फ्लुएंस प्लेटो. ओके, इन हाउ, इन विच थ्योरी? थ्योरी ऑफ आइडिया, थ्योरी ऑफ justice ruled by philosopher king, or these theories. Okay, so we have completed this PYQ and context of Plato. Now, okay, you can write just 1 or 2 paragraph based on context of Plato. Since man is creature of social circumstances, 5th century social, economic, political conditions like slavery and other things have deep impression in mind of Plato. The 3 influences are following. First, loss in Peloponnesian War dash. Athens lost against Sparta due to presence of ignorant ruler, and decline of Athens started. Full stop. Plato castigated democracy for loss of Athens in Peloponnesian War. All right. Now, second point, Socrates trial. Wisest man and father of philosophy, Socrates को बोला जाता है father of philosophy, was killed by a trial in regime of democracy for speaking truth. All right. Second point is third, sophism. Sophists were relativist, political educationist corrupting youth to join politics for money and power. All right. They challenged absolute notion of knowledge. Okay. Now, sophist theory of knowledge, sophist theory, sorry, write one thing. Professor Barker calls sophist as half professor, half teacher, half philosopher, and half generalists. All right. Sophist notion of relativism was criticized by theory of knowledge of Socrates. Okay, Socrates call knowledge as of 2 types and draw this table. Okay, theory of knowledge, opinion, true knowledge, ये टेबल आप बना लीजिए.
ओपिनियन, सब्जेक्टिव, रिलेटिव, ये बना लीजिए। ऑलराइट, ये टेबल आपने बना ली होगी। सेकंड, अब आगे लिखिए, अनदर सोक्रेटिक डिक्टम, DICTUM डिक्टम इज knowledge is virtue. It means that person having true knowledge ब्रैकेट में लिख लो, फिलोसोफर किंग इज ए वर्चुअस पर्सन, फुल स्टॉप। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ओके, इट मीन्स दैट वी शुड आस्क क्वेश्चंस about what is happening around us in our social life. Article 19(1)(a) of Indian Constitution gives fundamental right to freedom of speech and expression. The meaning of life is good life, and good life can be achieved by excellence. Knowledge gives excellence, and dialectics is a method to attain knowledge. All right. Socrates has deep influence on Plato, or indelible imprint in the mind, on the mind of Plato, in his theory of idea, theory of knowledge, theory of education, and theory of philosopher king. All right. There is a logical link between a theory of knowledge and theory of ideal state of Plato ruled by philosopher king. Bracket. Knowledge is virtue, and philosopher king is virtuous person, suitable to rule over city state. Okay. So I hope you have written notes about context of Plato. Again, I can revise it for you. First, Peloponnesian War, defense of laws of Athens. Second is Socratic trial, and third is sophism, and fourth is Socratic theory of knowledge. Knowledge is virtue, unexamined life is worth living, and two types of knowledge. So Socrates के 3 पॉइंट याद रखना है, knowledge classification, true knowledge वाला, second unexamined life is not worth living, and third is knowledge is virtue. All right. So this is context of Plato. Now come to genesis of political thought. Again, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि कोई भी सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशन होती है थिंकर की, दैट इन्फ्लुएंस द माइंड ऑफ पर्टिकुलर थिंकर. ओके, नाउ व्हाट इज डू? ही critically reviews existing theories. Okay, we will see this in when we will discuss about justice. Okay, and after reviewing he proposes vision of ideal state or ideal society. All right. So प्लेटो क्या करता है? वो भी यही काम करता है, वो भी फिलोसोफर है. तो ही प्रपोजेज आइडियल स्टेट रूल्ड बाय फिलोसोफर किंग एंड इट इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ जस्टिस. ऑलराइट. सो प्लेटो का विजन क्या है? द विजन ऑफ आइडियल स्टेट. Ideal state must be ruled by philosopher king. Idea of justice. प्लेटो का एक फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है, या तो रूलर, इफ रूलर इज देयर either they become philosopher or philosopher start ruling. All right. If ruler are there, they should be taught philosophy. Okay, or philosopher must become ruler. Then will the decline of Athens will stop. ठीक है? Either philosophers become ruler
or ruler learn philosophy, there will be no end to human sufferings. All right, तो ये statement आप लिख लीजिए. Plato proposed vision of his ideal in his book Republic in form of ideal state ruled by philosopher king. Okay, and based on theory of justice. Plato proposed that either philosophers become ruler, ruler or ruler learn philosophy, there will be no end to human suffering or predicament. ऑलराइट, तो अब प्लेटो का एक ही ऑब्जेक्टिव बच गया कि हमको एक आइडियल स्टेट बनाना है जिसमें रूल कौन करेगा? फिलोसोफर किंग, यानी मोनार्की तो चाहिए उसको, लेकिन फिलोसोफर किंग होना चाहिए. ओके, तो ये पूरी प्लेटो की फिलोसॉफी का सार है, विजन ऑफ आइडियल सोसाइटी. ओके, अब हर थिंकर का क्या करना है कि हर कोई भी थिंकर आप पढ़े तो उसका क्या करें, चार्ट बना लीजिए. आई कॉल इट एज फिलोसोफर्स चार्ट. ओके, दिस इज लाइक फिलोसोफर्स चार्ट. फिलोसोफर्स चार्ट. सॉरी. तो फिलोसोफर्स चार्ट में क्या करना है कि हर थिंकर का आपको एक पेज तैयार करना है. ऑलराइट, सबसे पहले टाइम एंड स्पेस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ थिंकर. सो वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 5th century BC, Athens and Greek, and it is part of ancient Western political philosophy. And three things which has influenced the mind of Plato is Peloponnesian War, Socratic trial, and criticism of sophism. Okay, now the concern of Plato to make Athens ideal state, because Athens lost war in Peloponnesian War and it was declining Athens, and Plato as a patriot want to make Athens an ideal state. All right, and ideal state ruled by philosopher king, and it should be based on idea of justice, the principle of justice. तो प्लेटो की जो मेन बुक है रिपब्लिक, रिपब्लिक जो वर्ड है ऐसा लगता है पॉलिटिक्स का वर्ड है. इन लैटिन इट रिलेट टू पॉलिटिक्स. इट हैज टू मीनिंग. लैटिन it means politics, but in Greek it means justice. So republic has two meaning. His book Republic is also about politics but mainly about justice. और इसकी सबटाइटल क्या है इस बुक का? कंसर्निंग जस्टिस, रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस. ओके, सो सेंट्रल कंसर्न ऑफ प्लेटो इज ही वांट टू क्रिएट ए आइडियल स्टेट ruled by philosopher king, and it should be based on idea of justice. Or republic has two different meaning, but central idea of is philosopher king. Philosopher king will rule over whole city, and it should be based on idea of justice. Okay, बाकी ideas इसके क्या है? After discussing context, we will come to theory of form or theory of idea. Then we will come to theory of classes, theory of justice, and theory of philosopher king, theory of education, theory of communism. Okay, so these are prominent theories. Now the Plato's work is multidisciplinary in nature because it will discuss about psychology, mind or soul. Second, sociology classes, politics discuss कर ही रहे हैं, philosophy हो ही गई, philosophy means ethics. Okay, education. So the work of Plato in his Republic is multidisciplinary. It involves psychology, it involves philosophy, it involves sociology, politics, education, etc. Okay? Psychology, education, sociology, etc. Okay? And प्लेटो को जो टाइटल दिया जाता है सिग्निफिकेंस, इसका टाइटल वो है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी और फादर ऑफ आइडियलिज्म. वी विल सी इट when we will discuss about theory of idea. Okay, now methodology of
प्लेटो. मेथोडोलॉजी क्या होती है पर्टिकुलर फिलोसोफर की? हाउ ही इज प्रोपाउंडिंग थिंग्स, इन विच वे. इधर साइंटिफिक मेथड यूज कर रहा है और फिलोसॉफिकल मेथड यूज कर रहा है. वी विल डिस्कस दीज मेथड लेटर, बट it is deductive in nature. Okay, it is dialectics based or it is analogy based. They will come when we will discuss theory. Okay, dialectics means asking questions. Analogy, give an example. He will give example of sailor, ship, ring of Gyges, or allegory of cave, shoemaker, physician. He will use analogy to explain the things. Similarly, dialectics, critically examining existing theory and proposing his theory of justice. Deductive, there are two different approaches. One is inductive and another is deductive. Suppose 2 plus 2 is 4, 4 plus 4 is 8. It means sum of two even number is even. So how we concluded? Through scientific experiment. We have proved in particular and then we have generalized. Okay, but Athens was having democracy and democracy led to loss of Athens. Plato ने इसको generalize कर दिया that democracy is bad form of government. All right, so this generalization based on particular example is deductive in approach. Okay, so methodology, dialectics, asking questions or critically reviewing existing theories and proposing his theory. Analogy, metaphors, using examples, similes. Deductive, not scientific. Suppose particular girls are weak in mathematics, then we will generalize that every girls are weak in mathematics. Okay, so this shrewd generalization based on some stereotype, it is deductive in nature. So democracy lead to decline of Athens and hatred toward democracy is deductive in nature. Athens में democracy की वजह से loss हुआ, then democracy is worst form of government. Okay, his influence, every philosopher is influenced by somebody. Okay, so Socrates, Pythagoras, Heraclitus and Parmenides. Let us start from here only. Okay, ये हमने देख लिया इसका context, central purpose, idea, other ideas, and his multidisciplinary work, his significance, methodology, and now we will see the influence by. So Plato influenced generally many thinkers, but 4 important thinkers. Okay, so influence on Plato. First is Socrates. We have seen Socrates' theory of knowledge. Okay, theory of knowledge. Okay, and knowledge is virtue. Knowledge is virtue. Another thinker is Pythagoras. His idea of arithmetic and geometry, soul, transmigration, sexual equality or gender equality. So Pythagoras, arithmetic or geometry, because in arithmetic the knowledge is perfect. 2 plus 2 will always be 4. The true knowledge, absolute knowledge. Okay. Similarly, soul transmigration. We will see once we will come to theory of soul and gender equality. Plato provided education for both sexes, male or female. Plato prescribed for rulership to both male or female. Philosopher king can be philosopher queen. All right. Third thinker is Heraclitus.
and fourth is Parmenides. Okay, Heraclitus and Parmenides बोलते हैं इसको. Heraclitus, his theory of change, and Parmenides theory of universal idea. Okay, so theory of change, Heraclitus, and theory of universal change. Let us see what is theory. Before Plato came in 5th century, intellectuals in Greece were asking questions about universe. What compose of universe? यानी यूनिवर्स किस चीज से मिलकर बना हुआ है. In that, Heraclitus says that universe, this material world, okay, this material world is continuously changing. Nothing is permanent in this world, this material world. Everything is temporary. Okay, so this material world is continuously changing. It is temporary in nature. Okay, so nothing is absolute. All right, so ये Heraclitus बोलता है. Parmenides पे आते हैं, तो he says that there is a world of ideas. There exists universal idea which is permanent in nature. Let me explain again. एक तो ये material world है around जिसमें हम रहते हैं. तो Heraclitus is saying that in this material world nothing is fixed, everything is temporary, everything is changing, nothing is permanent, nothing is absolute. In this material world, this sensual world. Okay, Heraclitus is saying this. What is Parmenides saying? Parmenides is saying that there exists a universal idea, universal world, the world of idea. This is material world, and there is different world of idea, in which there exists universal truth or universal idea. Okay, so Socrates, from Socrates, theory of knowledge, and knowledge is virtue. From Pythagoras, arithmetics, mathematics. Heraclitus, from Heraclitus he is saying theory of change in this material world. इस material world में तो सब change हो रहा है, Heraclitus ये बोलता है. Parmenides is saying that beyond this material world there exists world of idea in which everything is permanent, everything is absolute. Okay, so in now, okay, now we come to theory of idea, or theory of form. Plato. All right, influence on Plato was from four thinkers: Socrates, Pythagoras, Heraclitus, and Parmenides. ओके, सोक्रेट्स का तो समझ में आता है, पाइथागोरस का भी मैथमेटिक्स समझ में आ गया. हेराक्लाइटिस इज सेइंग अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड. ओके, Parmenides is saying about that world of idea. So this world is continuously changing or constant flux, but that world is stationary, permanent, transcendental, universal. ओके, तो यहां से चारों से निकलती है इसकी प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया. तो फर्स्ट थ्योरी ऑफ Plato is theory of idea or theory of form. Okay, before starting theory of idea or form or Plato, let us write some notes on influence on Plato. Okay, first Socrates. I hope notes लिखाने के लिए बजाय इससे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं. Socrates यही लिख लीजिए आप. Socrates theory of knowledge and knowledge is virtue. Pythagoras arithmetic or geometry. Heraclitus theory of change in this material world. Okay,
परमानेंट नाइट इज थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल आइडिया इन दैट वर्ल्ड। तो दो वर्ल्ड है डिफरेंट। ये चीज याद रखनी है कि मटेरियल वर्ल्ड जो है इसमें परमानेंट चेंज हो रहा है, लेकिन जो दूसरा वर्ल्ड है जो आइडिया का वर्ल्ड है, ओके, उसमें सब फिक्स है। तो दो वर्ल्ड है ये। नाउ कम टू थ्योरी ऑफ आइडिया फॉर्म ऑफ प्लेटो। ओके, इन्फ्लुएंस समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थ्योरी ऑफ फॉर्म और थ्योरी ऑफ आइडिया। ओके, अब तक हमने एक बैकग्राउंड बनाया प्लेटो का, कि प्लेटो का कंटेक्स्ट क्या है, प्लेटो की इन्फ्लुएंस कौन करता है, मेथोडोलॉजी क्या है प्लेटो की, प्लेटो के वर्क क्या है। ठीक है, ओके। सो नाउ थ्योरी ऑफ आइडिया। ठीक है, नाउ let me ask some question to you. What is this? And what is this? What is this? So what are those? मैंने 5 फिगर ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5। What are those? I hope these are triangle. Okay. Suppose 3 different chairs are there. One is revolving chair, one is plastic chair, and one is throne of emperor. 3 different chairs are there. How do you know that it is a chair? Question is, first question, how do you know that it is a chair? मैं बोलूँ आपसे कि what is? I have 5 different pen. One is Trimax, one is Fine Grip, one is Montex. 5 different pen are there. They are of different company. Even they are different structure. Some is ball pen, some is gel pen. How do you differentiate between them? How do you know first that these are pen, or these are triangle? This is the question. How do you know that something is there? Okay, just a minute. How do you know? तो जैसे ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल तो अलग अलग है, बट यू आर सेइंग दैट डेफिनेटली दे आर ट्राइंगल। Though how do you know that it is triangle, or how do you know there are 5 different pen? Pen is changing its structure, shape, matter is changing, but how do you know that it is a pen? It is pen. The question Plato is asking is that how we know about the things around in this material world. इस material world में जो things हैं, पेन, पेपर, चेयर, बिल्डिंग, हाउस, जैसे हाउस है, इन सेम कॉलोनी देयर आर 10 डिफरेंट हाउसेस। किसी में बालकनी होगी, किसी में नहीं होगी, किसी में रूफ होगी, किसी में नहीं है, बट यू नो दैट इट इज हाउस, बट दे आर डिफरेंट। 5 डिफरेंट हाउसेज आर देयर एंड दे विल से दिस इज हाउस। हाउ विल यू कम टू कंक्लूजन दैट दिस इज हाउस? सो प्लेटो इज आस्किंग सिंपल क्वेश्चन दैट if we look things around us, how we know that thing exists? Because things are different. 5 अलग अलग पेन है, 5 अलग चेयर है, हाउस है, तो कैसे पता लगा पा रहे हो? Because things are different, but what is common in that is not changing, the idea. Okay, idea is constant in there. Suppose 1 2 3 4 5, there are 5 triangles. The idea of triangle is
three sides, 180 degree sum. This is fixed. But the triangle which is existing in this material world are different in shape and different in structure. But how can we identify that it is triangle, or how our mind understand the reality? The question is, Plato is asking question is, how do our mind understand the reality or things around us in this material world? ठीक है, यानी चेयर, there can be 10 type of chair, but idea of chair is fixed. Okay, but the matter of chair can be different, plastic, iron chair, steel chair, different material can be there. It means that the idea of something is permanent. आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले चले जाइए, चेयर, आप उस समय की चेयर को देखेंगे, then you will say it is a chair. Suppose हड़प्पा सिविलाइजेशन का आपको घर मिलता है, तो you will say it was home, it was chair. So the idea of chair or idea of things are permanent in nature. The conclusion is simple. The idea is constant, idea is permanent. Idea is eternal. Idea is transcendental. Idea is beyond time and space. Time and space. Okay, so this is the conclusion from this question. एक क्वेश्चन पूछा है प्लेटो ने अभी, तो क्योंकि फिलोसॉफी जो होती है थोड़ी डिफिकल्ट होती है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज फिलोसोफर इज यूजिंग डिफरेंट टर्म्स, कॉम्प्लेक्स टर्म्स, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिलोसॉफी. एक फिलोसोफर ने कहा था कि, एक स्कॉलर ने, सॉरी, अगर किसी फिलोसोफर को समझना है तो उसको लेमेन टर्म्स में समझिए. ऑलराइट, तो चेयर, पेन, ये सब एग्जांपल जस्ट आई एम गिविंग so that you can understand the concepts. Okay, it means that material thing exists in different form, but idea exists. Okay, suppose idea of triangle exists. I've written na, idea of triangle exists. This is idea of triangle, but in reality different triangle exists. ठीक है. Similarly, idea of chair is fixed, but different chair exists. चेयर का आइडिया तो एक ही, जो बैठने के काम आती है, आप देख के पता लगा लो कि ये चेयर है, बट हाउ डू यू नो? बिकॉज समथिंग माइंड नोज द आइडिया. और अगर जानता नहीं तो डायलेक्ट्रिक्स के माध्यम से वी विल गेट द ट्रू नॉलेज और आइडिया. सोक्रेट्स की थ्योरी ऑफ नॉलेज का यहाँ एप्लीकेशन यही तो है कि आइडिया जो होता है वो परमानेंट नॉलेज, ट्रू नॉलेज. ट्रू नॉलेज क्या होती है? माइंड में, आइडिया में, दैट इज फिक्स. चेयर का आइडिया 100 साल बाद में भी यही रहेगा. चेयर की शेप, चेयर की स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, लेकिन चेयर का आइडिया सेम रहेगा. सिमिलरली हाउस, आज से 500 साल पहले का आप घर देखोगे तो पता लगा लोगे कि ये घर है, दिस इज हाउस. इवन 1000 years later you will say that this is house. So it is not depending, idea is not depending on time. इंडिया के हाउस हो चाहे यूएस में भी देखोगे तो पता लग जाएगा कि हाउस है. इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड स्पेस. इट इज परमानेंट, इट इज यूनिवर्सल, इट इज ट्रांसेंडेंटल, इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. तो आइडिया इज समथिंग विच इज परमानेंट इन नेचर. ओके. एंड प्लेटो ने तो अभी एक ही क्वेश्चन पूछा है जो कि इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका कि हाउ डू आवर माइंड अंडरस्टैंड द रियलिटी. ओके, सो अब एक बात बताइए, द थिंग्स विच इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, कैन इट बी रियल और कैन इट बी परमानेंट? नो. सपोज अपन बोले कि ये चेयर परमानेंट है, तो रिवॉल्विंग चेयर है या बैक चेयर है, इट इज परमानेंट. But different chair will come.
It means that the chair which exists doesn't have permanent significance. It is temporary. But the idea of chair is permanent. There are two things. One is idea of chair, and one is physical chair. ठीक है? Idea of chair is used to sit. Physical chair is some revolving chair. Different chair will come, ergonomic chair, है ना? Different plastic chair will be different. So which is permanent, physical chair or idea of chair? It is the idea of chair which is permanent, not the physical chair. Okay, so how our mind understands the reality? Because we have idea in our mind which is permanent in nature. So when we see the things, suppose मैंने पूछा कि ये क्या है और ये क्या है, मैं पूछूंगा कि ट्राइंगल कौन सा है, तो यू विल से दैट द फिगर 1 इज ट्राइंगल. You will not say the figure 2 is triangle, and figure 3 is figure 3 is a triangle, you will say, because we have idea of triangle in our mind. So if we see, जब आपने फिगर 1 को देखा तो आपने जो माइंड में आइडिया है ना ट्राइंगल का, कि ट्राइंगल होता है जिसकी 3 साइड्स होती है, then you compare this figure to your idea in mind. आइडिया इन माइंड, आपके माइंड में आइडिया है तो आपने माइंड के जो आइडिया से इसको कंपेयर किया, सिमिलरली आपने इसको कंपेयर किया कि ये तो ट्राइंगल नहीं है, ये क्या है, रेक्टेंगल, क्योंकि आपके माइंड में रेक्टेंगल का आइडिया है. सिमिलरली इसको कंपेयर किया इस व्यक्ति ने. इट मींस दैट आइडिया इज परमानेंट. मटेरियल वर्ल्ड हैज नो सिग्निफिकेंस, इट इज टेम्पररी इन नेचर. Okay, so the first question asked Plato is how do we understand the world around us? Because we have idea. It means that idea is real. ठीक है? Idea is real. Okay, so there are two different world. This is world of matter, physical world, and there are world of idea. Okay, first you take down some note about what is real. Okay, let me dictate some notes from my notes. Okay, Plato's theory of form or idea. First, what is real? एक ब्रांच होती है एपिस्टेमोलॉजी. So epistemology is about the source of knowledge. Source of knowledge. It means how we do know that this is triangle. Okay. So in notes write down. How does our mind understand this world? How do we know that it is a chair, pen, notebook, house, square or triangle? All right. This is one question. There exists idea for everything which exists in material world or physical world. Mind compares a worldly thing to the idea / form. Okay. Idea is real and material world is reflection of ideal world. ये है ना material world, ये reflection है किसका? वर्ल्ड ऑफ आइडिया का. ओके. आइडिया इज ट्रू नॉलेज
essence of something, basic concept, full stop. It is absolute, objective, eternal, transcendental, and beyond time and space. It is manifestation of perfection. Object of thoughts which are in mind are true reality. Example, idea or form of chair is universal. Idea of beauty is real rather than beautiful things. ब्यूटीफुल थिंग्स तो अलग अलग हो सकती है, सब्जेक्टिव है मेरे लिए ब्यूटी की, ब्यूटीफुल थिंग क्या है, लेकिन आइडिया ऑफ ब्यूटी इज फिक्स्ड. ओके, हेंस रियलिटी इज शेडो ऑफ आइडिया. जो रियलिटी है इसकी शेडो है, यानी इसका रिफ्लेक्शन है. ये मिरर लगा हुआ है बीच. प्लेटो इज नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी ड्यू टू हिज थियरी ऑफ आइडिया. ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल पेंटिंग. अब मेरे को लग रहा है कि ब्यूटीफुल नहीं है पेंटिंग, आपको लग रहा है, लेकिन ब्यूटी का जो आइडिया है ना वो फिक्स है. ओके, तो आइडिया जो होता है ना, इसकी समराइज अभी तक का ये करते हैं कि आइडिया जो होता है वो रियल है. हमारे माइंड में हर चीज का एक आइडिया होता है, वो फिक्स होता है. जो हमारे वर्ल्ड में फोन है, जैसे फोन, आइडिया ऑफ फोन इज की टू कम्युनिकेट ओवर कॉल और टू यूज मल्टीमीडिया, दैट इज फिक्स. But phone, somebody has, can be a phone of Apple, somebody Samsung, somebody has keypad phone, somebody has touch screen or flip phones. But idea of phone is fixed. देखो, जैसे ही हम फोन देखेंगे ना, हमने एप्पल का फोन कभी नहीं देखा, बट जैसे हम देखेंगे कि एक व्यक्ति के पास एप्पल का फोन है, we will immediately say that he has phone, because we have idea of phone in our mind. यानी प्लेटो जो पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हाउ डू वी अंडरस्टैंड द रियलिटी थ्रू आइडिया इन माइंड. फर्स्ट थिंग इज दैट माइंड में जो आइडिया उससे कंपेयर करते हैं दिस मटेरियल थिंग को. ठीक है, और मटेरियल थिंग में जो मटेरियल वर्ल्ड में जो थिंग्स हैं, दे आर नॉट परमानेंट, दे आर नॉट फिक्स्ड. ओके, दे आर कंटिन्यूसली चेंजिंग. इट मीन्स दे आर नॉट रियल. द रियल इज आइडिया, दैट इज फिक्स्ड, दैट इज परमानेंट, दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. यानी दो वर्ल्ड हैं. एक तो आइडियल वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया का. ठीक है, ये वर्ल्ड है वर्ल्ड ऑफ आइडिया का, वर्ल्ड ऑफ आइडिया का. यहां चीजें फिक्स हैं, परमानेंट हैं, तब बदलती नहीं है. और इसको रिफ्लेक्शन होता है इसका यहां पर. ये है मटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड. ओके, यहां रिफ्लेक्शन है, तो ये रियल है, ये क्या है, शेडो है. तो रियलिटी इज, जो रियलिटी जिसको हम कहते हैं, इज शेडो ऑफ आइडिया. ओके, तो यहां तक समझ में आ गया होगा आपके. ठीक है, सो लेट अस सी. ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया, ये ऐसे हो गया, ये हो गया. अब इसका मतलब क्या है कि एक आइडिया है, यूनिवर्सल आइडिया या आइडिया ऑफ गुड, जैसे प्लेटो ने कहा उसको आइडिया ऑफ गुड. उसके बेसिस पे फॉर्म होती है, फॉर्म्स, और उसका रिफ्लेक्शन होता है मटेरियल थिंग्स. थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आई विल ट्राई दैट यू विल लर्न दीज थिंग्स. सपोज आइडिया ऑफ गुड है, उसमें फॉर्म एग्जिस्ट करती है ट्राइंगल. एक आइडियल ट्राइंगल है जो आइडिया ऑफ गुड, यानी एक वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया, वहां पे एग्जिस्ट, ये है वर्ल्ड ऑफ आइडिया, वर्ल्ड ऑफ आइडिया, और ये मटेरियल वर्ल्ड. ओके, तो आइडियल ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है. तो मटेरियल वर्ल्ड में जब हम कोई सा भी ट्राइंगल देखते हैं, ऐसे ऐसे कैसा भी, तो वी कंपेयर विद दैट ट्राइंगल टू आइडेंटिफाई. हाउ वी सी दैट इट इज ए हाउस. तो आइडियल हाउस यहाँ पे आइडिया, वर्ल्ड ऑफ आइडिया में पड़ा हुआ है, वो उससे कंपेयर करते हैं. सिमिलरली रेक्टेंगल. ओके, अब हमने यहाँ पे देखा घोड़ा, हॉर्स, तो आइडियल horse has been placed in world of idea.
तो देयर आर टू वर्ल्ड्स. ओके, नाउ एक टेबल आप बना लीजिए, इसमें लिखिए कि फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज मटेरियल वर्ल्ड. एक तो ये वर्ल्ड है, एक वर्ल्ड है जो आइडियल वर्ल्ड है, वर्ल्ड ऑफ आइडिया. भी देखा ना, ये तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया है और ये मटेरियल वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड. अब इसके कुछ देख लेते हैं. ठीक है, ये किससे मिलके बना होता है? मैटर से. ये आइडिया. ओके, नाउ हाउ वी सी दिस वर्ल्ड? थ्रू सेंसेस. हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आंख, नाक, कान, ईयर एंड स्किन. टच करके देखते हैं थ्रू सेंसेस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेंसुअल वर्ल्ड. ओके, इसको देखेंगे माइंड. दिस इज इंटेलिजिबल वर्ल्ड. इंटेलिजिबल वर्ल्ड. ओके, दिस इज वर्ल्ड. जैसे एग्जाम्पल इसको दे, वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स. ब्यूटीफुल थिंग्स. दिस इज वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी. ओके, फोर्थ इज दिस इज वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन. इट इज बेस्ड ऑन ओपिनियन. इट इज बेस्ड ऑन ट्रू नॉलेज. फिफ्थ, constantly changing at flux. Fifth, perfect, eternal. Okay, see, depend on idea. Independent of anything. It was created. It was existing since beginning. आइडिया कभी ना क्रिएट होता है ना एंड होता है. तो since beginning. Since beginning. Okay. This is false. This is true. Okay. This is universal. This is particular. Okay, now the symbols. Symbol of this is cave, sunlight. Okay, अगर आपने फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंस देखा है तो हेराक्लाइटिस इस वर्ल्ड की बात कर रहा था, और परमानाइडिस इस वर्ल्ड की बात कर रहा था. ओके, so there are two different world. One is physical material world and another is ideal world. Okay, फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे जो सराउंडिंग में है, हमें सेंसेस, इंद्रियों के माध्यम से पता चलता है, इस चीज को सेंसुरी वर्ल्ड बोलते हैं. और इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग डिपेंड अपॉन सम आइडिया एंड इट इज परमानेंट फ्लक्स. इट इज फॉल्स, इट इज नॉट ट्रू, इट इज पर्टिकुलर, इट इज सिंबल क्या है इसके? केव. ओके, बट आइडियल वर्ल्ड आइडिया पे डिपेंड करता है, और आइडिया वाज नेवर क्रिएटेड. इट वाज एग्जिस्टिंग सिंस बिगिनिंग. ओके, ट्रू, यूनिवर्सल, ये सब है. अब प्लेटो की फिलोसॉफी की हमने अभी तक 2 चीजें देखी. एक तो फर्स्ट, 2 वर्ल्ड है. एक मटेरियल वर्ल्ड है जिसके बारे में इतनी सारी बातें लिखी, 10 पॉइंट लिखे. एक आइडियल वर्ल्ड है. सो आइडियल वर्ल्ड इज हेयर एंड मटेरियल वर्ल्ड इज हेयर. दिस वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियल वर्ल्ड. यानी इस वर्ल्ड में कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, वो मिथ है, वो इल्यूजन है. और दिस वर्ल्ड में जो चीज एग्जिस्ट कर रही है, दे आर रियलिटी. एंड दिस वर्ल्ड रियलिटी को, जिसको हम रियलिटी बोलते हैं, शेडो ऑफ आइडिया. ओके, सो 4 पॉइंट आर देयर. आइडिया इज परमानेंट. आइडिया के बारे में इन्होंने बताया, थ्योरी ऑफ आइडिया है इसकी, कि आइडिया है जो फॉर्म है वो यही है कि
आइडिया है वो रियल है, ना कि मटेरियल वर्ल्ड। अब एक बात बताइए कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा होगा कि थ्योरी ऑफ आइडिया क्या है, आइडियल वर्ल्ड क्या है। थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इंडियन फिलोसॉफी पे जाते हैं। लेट अस मूव टू सम इंडियन फिलोसॉफी। इंडियन फिलोसॉफी में क्या जाता है कि देयर इज अ परमानेंट ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ, परमानेंट ट्रूथ और वर्ल्ड, वर्ल्ड ऑफ गॉड, वर्ल्ड ऑफ सुप्रीम पावर और ब्रह्म। और ये संसार जो है, जो भौतिक संसार है, मटेरियल वर्ल्ड, ये मिथ्या है। दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन। ओके, मोह माया है, जग है, मिथ्या है। सो दिस वर्ल्ड इज दैट मिथ एंड द परमानेंट आइडिया इज यूनिवर्सल। सो जो ये हम बात करें ना बार बार, ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया, वर्ल्ड ऑफ आइडिया, इट इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ गुड। और आइडिया ऑफ गुड की रिफ्लेक्शन क्या है? फॉर्म में। दीज आर फॉर्म्स, और फॉर्म, और ये है मटेरियल वर्ल्ड। ओके, तो इंडिया की फिलोसॉफी में यही तो है कि ये है, ये गॉड, सुप्रीम ट्रूथ, ट्रूथ, परमपिता परमेश्वर, और दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन। ओके, इल्यूजन, मिथ, दिस संसार। एंड द सोल विल, यहां पर पहुंच जाएगा, इसको बोलेंगे निर्वाणा। तो आपने देखा कि जो प्लेटो फिलोसॉफी बता रहा है, द फिलोसॉफी ऑफ एंशिएंट वेस्ट इज मीटिंग फिलोसॉफी ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया। बोथ फिलोसॉफी आर मीटिंग, both are saying same things. Plato is saying ideal world and real world, physical world. We are also saying ideal world, यानी world of idea, world of good, God, universal, परमेश्वर का वर्ल्ड है, परमात्मा का वर्ल्ड। और ये आत्मा, आत्मा यहां से आती है। बॉडी इज नॉट परमानेंट, दिस वर्ल्ड इज नॉट परमानेंट। तभी तो कहते हैं कि मोह माया है ये सब। ईश्वर जो है, परमपिता परमेश्वर का वर्ल्ड है, दैट इज सत्य, परम सत्य वही है। ऑलराइट, तो ये प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया है। ये एक्चुअली सिमिलर टू इंडियन फिलोसॉफी और हिंदुइज्म की फिलोसॉफी, सनातनी फिलोसॉफी। ओके, दैट परमानेंट इज, परमात्मा इज परमानेंट एंड दिस वर्ल्ड इज मिथ्या, इल्यूजन। ओके, दिस वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन। ओके, तो आपने प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया के स्टार्टिंग के नोट्स लिख लिए। रियलिटी, शेडो ऑफ आइडिया, व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉट रियल। ओके, एंड हाउ वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस एंड व्हाट इज परमानेंट। और दोनों वर्ल्ड को हमने कंपेयर भी कर लिया। लेट अस सी व्हाट वी हैव डन। ओके, सो इन्फ्लुएंस, हाँ, इन्फ्लुएंस में मैंने बताया ना कि जो हेराक्लाइटिस था उसने बताया था कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है दैट इज कांस्टेंट फ्लक्स। ओके, परमानेंट, देयर इज एग्जिस्ट यूनिवर्सल आइडिया व्हिच इज परमानेंट इन नेचर। तो यही तो, यही वर्ल्ड उसका है, वो मटेरियल वर्ल्ड है, और ये वर्ल्ड जो है उसका वर्ल्ड ऑफ आइडिया है। Okay, theory of idea we have started. How do we know things around us? Through idea. We have permanent idea, और idea कहाँ होता है? world of idea में। Okay, and there are two different world, world of idea and material world. This world is a reflection of this world. We consider this as real. Okay, now how, और we हमने कंपेयर किया इसको इंडियन फिलोसॉफी से, जो परमानेंट वर्ल्ड है और मिथ, इल्यूजन है। This world is illusion. Okay, now how is Plato using this theory, philosophy? He is saying that, ये डायग्राम हमेशा बना के चलना है आपको, ये और ये ट्राइंगल का, ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया, वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। आइडिया ऑफ गुड, आइडिया ऑफ गुड, फॉर्म और मटेरियल वर्ल्ड। ओके, ये दो वर्ल्ड, आइडिया ऑफ गुड। अब क्या होता है कि प्लेटो ने जो टर्म गॉड का यूज नहीं किया। जैसे ये वर्ल्ड एक्चुअली क्या है? वर्ल्ड ऑफ आइडिया, वर्ल्ड ऑफ गॉड का आइडिया, किंगडम ऑफ गॉड। तो गुड का मतलब यहां पे अच्छा नहीं है,
आइडिया ऑफ गुड का मतलब आइडिया ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी और सुप्रीम इटर्नल पावर। तो गुड को इक्विवेलेंट आइडिया ऑफ गॉड या सुप्रीम पावर ले सकते हैं, लेकिन उस समय रिलीजन नहीं था इसलिए अपन रिलीजन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आइडिया ऑफ गुड का मतलब है परम सत्य, द इटर्नल ट्रूथ, जिसको हम इंडियन फिलोसफी में परमात्मा कहते हैं, वो है। फॉर्म क्या है? आइडियल फॉर्म एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, आइडियल वर्ल्ड, और इसकी रिफ्लेक्शन कहाँ है? यहाँ पर। ठीक है। नाउ व्हाट प्लेटो इज सेइंग दैट व्हाई एथेंस इज ऑन डिक्लाइन, बिकॉज रूलर आर बिहाइंड मनी एंड पावर, यानी मटेरियल वर्ल्ड के पीछे पड़े हुए हैं, वो इस मिथ्या के पीछे पड़े हुए हैं। they are not having the idea of governance and administration, idea of governance and administration। तो आइडिया कहां होगा? यहां पे, और यहां पे क्या होगा? फॉल्स थिंग्स होंगी। तो they were ruling not based on the idea of good governance and good administration, efficient administration, they were running behind money and power। Okay, it means that they do not have true knowledge, they do not have the rulers. Athens loss in Peloponnesian War was because of ignorant ruler, because ignorant ruler do not have knowledge of idea of governance and administration। It means, what is the remedy? Person who have knowledge of governance and administration should be the ruler, and that person will be philosopher king। It means that until ruler are philosopher or until philosopher are ruler or ruler learn philosophy, there will be no end to predicament of human life। ओके, तो आइडिया एथेंस के इग्नोरेंट रूलर क्यों है? क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। दे आर इन इल्यूजन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑफ मनी एंड पावर। ओके, तो यहां यूज करता है वो कि ये जो दो वर्ल्ड में है ना, ये तो वापिस बता देता हूं कैसे यूज करता है कि ये है आइडियल वर्ल्ड, ये है रियल वर्ल्ड। सो governance, who should rule? Who has idea of governance and administration? But Athens ruler was ignorant. Their idea of this world, they were having illusion of money, power, etc., corruption, etc. It means that who should be ruler? Who have idea of this world or that world? That world. It means that person is philosopher। Why you are getting why philosopher king should rule? Because he has idea of that universe, एक इस वर्ल्ड की और एक उस वर्ल्ड की, उसको परम सत्य का ज्ञान है। he has idea of truth, permanent truth। sorry। okay, now we have seen theory of idea, two different world and different nomenclature or how to grasp the things। now Plato's methodology की एक चीज है कि he Plato's methodology की एक चीज है कि एक तो डायलेक्टिक्स है, ओके, एक है एनालॉजी और मेटाफर्स के थ्रू बात करता है, मेटाफर्स। Now comes the famous allegory of cave। famous allegory of cave, allegory of caves। okay, allegory of caves is enlightenment philosophy। यानी एक केव का एग्जाम्पल देगा प्लेटो। एक बात मैं आपको बता दूं कि इफ यू अंडरस्टैंड एलिगरी ऑफ केव, प्लेटो की सारी थियरी इस एलिगरी ऑफ केव से निकलती है। लेट अस सी,
सपोज देर इज ए केव, केव है ये, different person 1, 2 and 3 are sitting और उनकी आई साइट इधर है, they are sitting on this side, okay, and they are in chains, people are kept in chain, so they cannot turn around, okay. Here is sun, it is sun, various things are there. Suppose there is triangle, suppose there are square. Let us take one example, okay. This is idea sun and this is idea of triangle. Now sun की ये है, इसमें आप इमेज पड़ेगी यहाँ पे ट्राइंगल की, दिस इज रिफ्लेक्शन और शैडो, ओके. सो what we are seeing is that we are seeing this triangle, and जब ये triangle को देखते हैं they consider this as real, okay, reality for them, okay. This is cave. अब हर चीज का यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग है. केव मीन्स इग्नोरेंस, ओके. शैडो reality. sun means which illuminates something, idea of good. ये गुड अच्छे बुरे की बात नहीं है, इसको गॉड मान लो एक थोड़ी देर के लिए, यूनिवर्सल पावर गॉड, दैट इज सन, आइडिया. नाउ व्हाट हैपेंस कि हम देखते हैं ये पर्सन 1, 2, 3 दे सी दिस रिफ्लेक्शन एंड कंसिडर देम रियलिटी, ओके. सो इसका सिंबॉलिक मीनिंग तो ये है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि रूलर्स वर इग्नोरेंट, they were considering money and muscle, power as reality. सो क्या करना है कि एक आदमी, सपोज इस पर्सन को क्या करना है कि बाहर लेके जाना है, चैन से निकालना है और उसको सनलाइट में लाना है. व्हेन दिस पर्सन विल कम इन सनलाइट, उसकी आंख, ही विल फील पेन इन द आईज बिकॉज ही सीज सनलाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, ओके. एंड हु विल शो इन द सनलाइट द एडुकेशन, द थ्योरी ऑफ एडुकेशन. तो एजुकेशन का मतलब ये होता है कि एजुकेशन की फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है, इट चैलेंजेस द कन्वेंशनल विजडम. व्हाट वाज कन्वेंशनल विजडम? दिस शैडो और दिस वाज कन्वेंशनल विजडम. बट आइडिया ऑफ गुड इज आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. ओके. तो हमने क्या किया कि इसकी चेन खोली और इसको यहां के लेकर आए. ही फील पेन बिकॉज ही वॉज कंसिडरिंग दिस एज रियलिटी, बट उसको ये बताया कि ये रियलिटी है. जैसे गैलीलियो का एग्जांपल लेते हैं. गैलीलियो से पहले ये था कि अर्थ इज एट द सेंटर एंड एवरीथिंग इज अराउंड अस, अर्थ. लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन इज एट द सेंटर. So it creates pain when people who are in chain bring to sunlight, because education is about challenging the conventional wisdoms. Okay, education first makes an uncomfortable because education is about turning around. Person ये था, इसको education is about turning around. इस person का मुंह इधर था, ऐसे देख रहा था ये, अब उसको चेंज करना है उधर के साइड. एजुकेशन अबाउट टर्निंग अराउंड मीन्स रेवोल्यूशन. अब देखिए फिलोसॉफी एलिगरी ऑफ की प्लेटो की हर थ्योरी, पूरा प्लेटो यहां से निकल जाएगा. दिस इज द इंपॉर्टेंट फिलोसोफर. प्लेटो को इसलिए फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं ना,
That's why, because his same one single allegory of cave is proving many things: shadow, reality. Okay, now the person has come to education. So after education he will become philosopher, because he is in the presence of sun and he has felt the idea of good. उसके पास ये आ गया idea of good. Okay, philosopher, same person become philosopher. ये पर्सन यहाँ आया, इसने सन को देखा एंड दिस पर्सन बिकम दिस philosopher. Now job of philosopher is over. He was not interested. Okay, he was not interested to again go back to cave. Not interested. Go back to cave. Okay. एक चीज हो रही है कि ये जो वर्ल्ड यहां तक केव जो वर्ल्ड है वो सिग्निफाई कर रहा है मटेरियल वर्ल्ड को, और ये वर्ल्ड को कर रहा है आइडियल वर्ल्ड को. नाउ आई हैव कनेक्टेड द प्रीवियस थियरी, आइडियल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड. दिस वाज मटेरियल वर्ल्ड. ओके, तो फिलोसोफर विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू गोइंग टू केव. ही वाज एंजॉयिंग सन, ही वाज एंजॉयिंग आइडिया, वर्ल्ड ऑफ आइडिया. माइंड में बैठा रहता है, सोचता रहता है माइंड के बारे में, दुनिया के बारे में, आइडिया के बारे में. एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, पावर, प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी उसको. बट he will be compelled to go into the cave to rule. Then he will become the same person we are talking. Okay, same person will come to this cave, same person. Okay, and he will be the philosopher king to rule them. All right. So this is allegory of cave. Allegory of cave में क्या है, तो दूसरे पेन से लेके करते हैं एक बार इससे. Allegory of cave जो है एनलाइटनमेंट की फिलोसफी है. ये समझ में आ गया तो प्लेटो समझ में आ गया पूरा. स्टार्टिंग में 3 पर्सन है, 1 2 3. ओके, सो दे आर सीइंग दिस शैडो of reality. This is real, this is shadow, and person 1 2 and 3 they are seeing this. Okay, और इसी को रियल मानते हैं. इट मीन्स दे आर केप्ट इन चेन. और ये क्या सिग्निफाई करता है, रूलर्स वर इग्नोरेंट. और ये क्या, कौन सा वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड. और केव किसको सिग्निफाई करती है, इग्नोरेंस को. तो अपन क्या करेंगे, इस पर्सन को बाहर लेके आएंगे, इसको सनलाइट दिखाएंगे, ये दिस इज सनलाइट, यानी आइडिया ऑफ गुड और आइडिया ऑफ गुड गवर्नेंस बताएंगे इसको. इट मीन्स एजुकेशन. एजुकेशन इज अबाउट टर्निंग अराउंड. पीपल ऐसे थे, उसको टर्न कर दिया सनलाइट की तरफ. Education is about revolution, enlightenment. Education is about challenging conventional ideologies. That is why Socrates say, unexamined life is not worth living. You were earlier assuming the things as real, but once you started seeing the sunlight, you started questioning. That's why. So the person is this. Education के बाद में person become this. एंड एजुकेशन के बाद में उसको समझ में आ गया कि वर्ल्ड आइडियल वर्ल्ड है, दैट इज रियल, और जिस वर्ल्ड में मैं रह रहा था, ठीक है, ये आइडियल वर्ल्ड है और ये मटेरियल वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में रह रहा था, दैट वाज फॉल्स नोशन. सो ही बिकम फिलोसोफर. नाउ इंटरेस्टेड ही नहीं है वो बैठा है माइंड में, वो आइडिया सोच रहा है. ओके, बट ही विल बी कंपेल्ड टू गो, और देन ही विल बिकम फिलोसोफर किंग. ओके, अब ये थ्योरी ऑफ आइडिया की जो एलिगरी ऑफ केव है मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया आपको. अब आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरी ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब है. आइडिया ऑफ गुड समझाना है, ठीक है, आइडिया ऑफ गुड. और एजुकेशन जब आ जाएगी तो फिलोसोफर किंग बने. तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन प्लेटो की यही है, उसको आइडिया ऑफ गुड, आइडिया ऑफ फिलोसफी, आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिखाना है. थ्योरी ऑफ एजुकेशन कंप्लीट. ओके, नाउ ही बिकम फिलोसोफर. फिलोसोफर कौन होता है वो समझ में आ गया. नाउ व्हाट इज फिलोसोफर किंग. He must rule. He must go to cave to rule the people and to tell them that what is real, what is good. The theory of philosopher king, theory of justice will be same, that philosopher king must go rule,
एंड दिस इज एनलाइटनमेंट फिलोसफी। और डिफरेंट वर्ड, तो अब तक के जो सारे हमने देखे थे कि इंडियन फिलोसफी से कैसे कंपेयर करें, रियलिटी क्या है, रियल वर्ल्ड क्या है, ये हमने कंपेयर करके अच्छे से बता दिया। ओके, अब एक चीज इसकी रियलिटी, इसकी प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया में रह जाती है, वो आइडिया ऑफ गुड। आइडिया ऑफ गुड को मैंने बता दिया, जैसे हमारे गॉड का कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, जो परम सत्य है, वो है आइडिया ऑफ गुड। लेकिन आइडिया ऑफ गुड को अपन अगर देखें तो सन की तरह है। जैसे कोई भी वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट हम कैसे देखते हैं, सपोज ये मार्कर है, ये कैसे देख रहे हो आप, इस पे लाइट गिर रही है सनलाइट से, तो सनलाइट क्या होती है, illuminates the worldly things. Okay, then we can see. Okay, similarly idea of good illuminates forms. तो जो काम सन का करता है, सन मटेरियल थिंग्स के लिए करता है, वही काम सन का आइडिया ऑफ गुड, गुड अच्छा बुरा नहीं है यहाँ पे, ये सन इल्यूमिनेशन का काम जो करे वो गुड है। ओके, सो तो सबसे पहले हमने क्या करा था कि रियलिटी क्या है, रियलिटी इज शैडो ऑफ आइडिया। ओके, रियल इज दिस, देयर एग्जिस्ट आइडिया फॉर एवरी मटेरियल थिंग, देयर आर टू डिफरेंट आइडिया वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड एंड रियल। मटेरियल वर्ल्ड, दिस इज मटेरियल, रियल वर्ल्ड, दिस इज रिफ्लेक्शन, यानी रियलिटी शैडो ऑफ आइडिया, दिस इज इटर्नल परमानेंट, और दोनों को कंपेयर किया। फिर हमने इंडियन फिलोसफी इसके साथ इसको कंपेयर किया। ओके, देन वी केम टू एलिगरी ऑफ केव, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफी, इसको आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं। ओके, उसके थ्रू हमने देखा कि क्या होती है फिलोसफी, मटेरियल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड को कंपेयर किया, पपेट्स। एक चीज और होती है कि हु वर कीपिंग अस इन चेन, द पॉलिटिशियंस who do not want us to see reality, advertising agency, advertisements के थ्रू। ओके, एंड सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब ये क्या करते हैं, रियलिटी को है मास्क करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो दो चीज के तो नोट्स लिख लिए थे, एंड नाउ राइट नोट्स ऑफ एलिगरी ऑफ केव। राइट, प्लेटो थ्रू द एलिगरी ऑफ केव intended to state the essence of education and meaning of being। एक चीज शायद मिस हो गई कि जो आइडियल वर्ल्ड होता है, ये दो वर्ल्ड होते हैं, ये वर्ल्ड और ये वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। दिस वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ बीइंग, वर्ल्ड ऑफ बीइंग। दिस वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग, it is changing, it is becoming something, world of being। okay, this is world of appearances। ठीक है, तो ये बिकमिंग और बीइंग, तो अपन को क्या करना है कि वी हैव टू बिकम ह्यूमन बीइंग, फिलोसोफर बीइंग। तो द रोल ऑफ एजुकेशन इज टू कन्वर्ट पीपल फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ बिकमिंग टू वर्ल्ड ऑफ बीइंग। तो जो आइडियल वर्ल्ड है उसको वर्ल्ड ऑफ बीइंग भी बोलते हैं। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में यूज किया, इसलिए आई थॉट इट माइट बी इंपॉर्टेंट। ओके, राइट, प्लेटो थ्रू द एलिगरी ऑफ केव इंटेंडेड टू स्टेट द एसेंस ऑफ एजुकेशन एंड मीनिंग ऑफ बीइंग। सिंबल्स, सिंबल, सन का जो सिंबल है उसमें आइडिया ऑफ गुड, या मैं टेबल बनाता हूं, सन आइडिया ऑफ गुड और illumination, okay, shadow, darkness, chains, ignorance। all right, now write down, while seeing image we cannot turn our head and consider that as reality, we are trapped in the images, we consider sensible things as real because we trust them। for example, in movie theater, जैसे मूवी थिएटर है उसमें स्क्रीन में जो चल रहा है ना, उसी को रियलिटी मान ली, जबकि मूवी थिएटर से बाहर, हाँ ये एक अच्छा एग्जांपल है
कि मूवी थिएटर्स जैसे ही बाहर आएंगे ना तब पता चलेगा कि रियल वर्ल्ड तो ये है. ओके, सो एजुकेशन मीन्स टर्निंग अराउंड. Prisoner must be compelled to stand and turn around. First, it is painful as he see light for the first time. Concept of education makes us uncomfortable, questioning conventional wisdom. The liberated person, philosopher, will be compelled to return to cave to share the illuminance. Philosophers who was enjoying sunlight has no intention to go to the cave. That is, philosopher doesn't want to rule. Hence Plato says, the person who is least eager to govern, to rule, is best ruler. Sunlight will turn around from becoming to being. ओके, ये एलिगरी ऑफ केव के लिखने नोट्स. अब आगे लिखिए. व्हाट इज आइडिया ऑफ गुड? इट इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज. इट इज सिमिलर टू द सन which illuminate all intelligible things. How we see the things in visible world? When it is in the light of sun. Hence, sun is universal source of all particular things. The function of sun is equivalent to form / good or idea of good, to show the part of knowledge. Good is similar to light. Idea of good is cause of knowledge and truth. ठीक है. Glaucon spelling Glaucon. Glaucon asked Plato, who is philosopher? Plato replied, person who loves truth, beauty, wisdom and knowledge. Plato uses significance of this theory. Plato uses theory of idea to prescribe his theory of ideal state, ruled by philosopher king, and on theory of justice. Plato argues that wrong deeds have their origin in ignorance, whereas knowledge leads us to right action and happiness. Decline of Athens was due to ignorant ruler running behind power and money, and philosopher only have knowledge of good governance and administration. ओके, तो देखो प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ आइडिया, फर्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ आइडिया, ये उसकी फिलोसॉफिकल वर्क है. ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया? प्लेटो पे इन्फ्लुएंस डिस्कस की है ना, और प्लेटो का कंटेक्स्ट डिस्कस किया, प्लेटो की फर्स्ट थ्योरी ऑफ आइडिया. ओके, थ्योरी ऑफ आइडिया इंपॉर्टेंट इसलिए है. ओके, अब देयर इज डिबेट वेदर, नाउ इन कंक्लूजन लिख लिए, देयर इज डिबेट अबाउट रियलिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ रियलिटी. फॉर आइडियलिस्ट लाइक प्लेटो द आइडिया इज रियल, for materialist like Karl Marx, matter is real, this material world is real. Postmodernist challenges the notion of reality or finding absolute truth. ठीक, तो प्लेटो को फर्स्ट फिलोसोफर, फर्स्ट पॉलिटिकल फिलोसोफर इसलिए बोला जाता है या फादर ऑफ आइडियलिज्म, बिकॉज इज थ्योरी ऑफ आइडिया, यानी उसने आइडिया की थ्योरी दी, आइडियल वर्ल्ड के बारे में बात करी. ही इज आइडियलिस्ट. आइडियलिस्ट इज ए पर्सन हु कंसिडर आइडिया इज रियल, हु गिव इंपॉर्टेंस टू आइडिया नॉट मैटर, हु गिव्स इंपॉर्टेंस टू
स्टेट और सोसाइटी, नॉट टू इंडिविजुअल। और ओके, सो आज हमने डिस्कस की थी कि ये आइडिया थ्योरी क्या है। तो व्हाट इज रियल? द रियल वर्ल्ड इज नॉट द मटेरियल वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज रियल, दिस वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी मटेरियल वर्ल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियल वर्ल्ड, रियलिटी इज शेडो ऑफ आइडिया। ओके, आइडिया इज रियल, आइडिया इज परमानेंट, आइडिया इज एसेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, आप पढ़ के आइएगा इसको, है ना। और हमने एलिगेरी ऑफ केव देखी और उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि उसकी कैसे एप्लीकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट उसको एथिक्स में यूज कर सकते हैं और कहीं ऐसे में यूज कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडिया ऑफ गुड। तो आज का लेसन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आज इसको यही खत्म करते हैं। तो पहली थ्योरी हमने कर ली है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया, जो कि फिलोसॉफिकल है और जो कि कॉम्प्लेक्स समझने के लिए, बट आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल, और आपको समझ में आई होगी। एक बार पढ़िए, कल वापस से इसको समराइज करेंगे, देन वी विल मूव टू डिफरेंट थ्योरीज, न्यू थ्योरीज, थ्योरी ऑफ justice, classes, soul, and theory of education. Okay, so now we can see the chart. Theory of class, justice, okay, then education and communism. Four theories are there. Okay, और सेंटर पे क्या है? फिलोसोफर किंग, रूलिंग आइडियल स्टेट, based on theory of idea. तो ये थ्योरी आज हमने कंप्लीट कर ली। ठीक है, 1 2 3 4 5 वी विल डू इन नेक्स्ट क्लासेस, कमिंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। इफ यू लाइक माय कंटेंट, you can subscribe, share, and bring your friends of political science to this channel. And I will continue to upload videos on Western political thought as I promise. And thank you very much again.